the queries had been very intelligent. Even I had been benefited by those queries, because some very important relevant points had been raised, though those points were, most of the points had been considered by me earlier, but there were some new points and very interesting points. And friends, today also we will be covering some topics about the job work and the penalties, and then we will be having an open house question and answer session for all the queries, if any. Tomorrow, fortunately, the organizers have taken a different view and filled up for the income tax part, because income tax is very, very important. And there had been many amendments recently. And they had come out with a very learned speaker, Mr. Rajesh Mehta from Indore. He's a senior chartered accountant, and he will be delivering the talk on the income tax issues. And then again, there would be an open question and answer session. I think it would be a beneficial session for all of us. I would be starting in, say, another 2-3 minutes, as usual, sharp at 5 o'clock. And then we will be having the go through. And it would be a culmination of the very good 7 days with you. We had been joined by you daily and with good question and answers. कुछ लोगों का बार बार मेरे पास ये मैसेज भी रहा है कि हमारा इंटरेक्शन और जो फीडबैक्स आए, उन्होंने सबने ये बताया कि पीपीटी आपको मिल गई है, पिछले 6 दिन की जो पीपीटी थी वो आपको ऑलरेडी मिल गई है, और साथ के साथ जो वीडियो यूट्यूब का लिंक है वो भी सर्कुलेट हो गया है. अगर किसी को यूट्यूब का लिंक नहीं मिला है या पीपीटीज नहीं मिली है, तो वो आज वापस से सारी पीपीटी और सारे यूट्यूब लिंक आपके ग्रुप्स में डलवा दिए जाएंगे. तो आपके ग्रुप्स में आप चाहें तो उसको यूज करें, और आप चाहें तो उनको अदर ग्रुप्स में भी सर्कुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन भी ऐसी है जो आप चाहें तो जहां पर भी चाहें वहां पे इसको सर्कुलेट कर सकते हैं. We will be taking a break of 1 minute and then we will be starting afresh on the topic. Today's topic. I think all are ready for the topic, and we'll be seeing. This mode of virtual education, it was never visualized earlier. But during this COVID pandemic, we had learned to use this Zoom or other web apps. And it has been a beautiful way of interacting with you, making friends with you, and having an interaction so that we can have a live question and answer session sitting in our office, at our home, or any other place. And cutting down the cost of organizing a conference or coming and going, traveling and other things. So friends, this is really good, and I think we can continue it within the past times, having a session daily at I think on every weekend on the recent topics, not only on GST but on income tax, FERA, FEMA, Enforcement Directorate laws, IPR, force majeure, litigation, drafting, and there are numerous topics on which we can always update our knowledge. And we will ask the organizers to continue with their educational series with the time. So we would be starting today's topic. Today's topic is the job work, penalties, and then the open house, the question and answer session for the benefit of all. So friends, what do we know about the job work? What is the concept of the job work under the GST, and whether the concept of job work is different in GST than it was under the VAT or the sales tax era, or it was in the excise or service tax. So we will have to understand what is the concept of job work under GST, and it is totally different under GST. We will be moving to this topic, but first it is very important to understand what is a job work.
In common parlance, in common understanding, we say that a job work is that we want to get something on some article or something, and that is called a job work. Even if you want to get a house painted, it can be termed as a job work, but as far as GST is concerned, strictly it would not be covered under job work. So for the purpose of GST, that is why I always say, आपको ये समझना पड़ेगा, जब जीएसटी के बारे में कोई टैक्स की राय मांगता है, तो आपको उस टैक्स की राय देने में उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और उस पर क्या टैक्स लगेगा, ये देखने के लिए सबसे पहले यू हैव टू सी द प्रोविजन. If you are not seeing the provision and giving the opinion directly on the basis of your notion, on the basis of your concept, then maybe sometimes you can be wrong. So it is always better to refer to the provision once whenever a question or opinion is asked to you about any taxability or any transaction or any specific work. So first of all, we will have to understand what is job work. And I think the concept of job work is known to everybody, but you have to understand here the definition, section 2 subsection 68 of the CGST. See this round and round going on. It is very important, you have to see. It means to undertake treatment or processing of certain goods belonging to principal. Now this becomes very important. Belonging to principal, and principal should be a registered person. If the principal is not a registered person, it is not job work as per GST. It is not covered under GST. If the job worker is a registered person or unregistered person, it doesn't matter. प्रिंसिपल का रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है. अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर कि जो प्रोसेस है या जॉब वर्क है, whether it would tantamount to manufacture or not. Again, it doesn't matter. What matters is that the principal should be a registered person. तो मान लीजिए आप जॉब वर्कर हैं और आपके पास किसी का काम जॉब वर्क होने के लिए आता है. क्वेश्चन ये है कि उस पर टैक्स की लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी. अगर किसी प्रिंसिपल का काम जॉब वर्क होने के लिए आता है और प्रिंसिपल अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें टैक्स की लायबिलिटी है, और अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें टैक्स की लायबिलिटी, और आप भी रजिस्टर्ड नहीं है. यानी कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है, जॉब वर्कर भी रजिस्टर्ड नहीं है. तो उस केस में लायबिलिटी क्या होगी, हम आगे वाली स्लाइड्स में we will be discussing about that. So for the purpose of job work under section 2 subsection 68 of the CGST Act, the basic condition is that the principal of whose goods you are doing the job work should be a registered person. और जब जॉब वर्कर के पास माल जाता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. एक बड़ा क्वेश्चन मेरे पास बार बार ही आता है, सर प्रिंसिपल की तरफ से एक ओनर के पास जॉब वर्कर के पास माल चला गया, उस स्थिति में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? My answer is that the ownership does not get transferred and it always remain with the principal. So friends, with this हमको साथ के साथ ये भी देखना है कि जॉब वर्कर के लिए और क्या जरूरत है, जॉब वर्कर के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है. तो जॉब वर्कर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो. अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पर भी इश्यू आ जाता है और उसको जॉब वर्क में शामिल नहीं किया जाएगा और उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ले जाया जाएगा. तो आपको जॉब वर्क समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा. मैंने एक ये एग्जांपल दिया है. ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि अगर मैं शूज बनाता हूं, ये पर्टिकुलरली यूपी के लिए आगरा, जहां पर वर्ल्ड ओवर के शूज जितने भी बड़े ब्रांड है वहां के उन ब्रांड के शूज इंडिया में बनता है और इंडिया में भी प्रीडोमिनेंटली आगरा में बनते हैं. तो अगर जॉब वर्कर ने जूता बनाया और प्रिंसिपल ने जूता बनाया और ये बक्कल लगाने के लिए अगर उसने वो जॉब वर्कर को भेजा, तो क्या वो जॉब वर्क की डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पर रजिस्टर्ड है और प्रिंसिपल रजिस्टर्ड होने की वजह से वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर रहा है
और मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने की वजह से it is required that it would be covered under the definition of the job work. So affixing of buckle and sending of the goods, that is sending of the shoes to the other person for getting a job work or fixing the buckle would be considered as a job work as per the definition given under the CGST Act. So now we will have to see the relevant definitions which are very important and which would be useful for you, because sometimes the client comes to you, he asks, sir, what is the difference between a job work and a works contract, whether this job work would be taxable or not. So for these things you will have to understand the relevant definitions. What are the relevant definitions? The first definition is section 2 subsection 19, that is of capital goods. Capital goods, I think everybody knows, I would not be elaborating much on it. And then the inputs. Again, inputs is other than the capital goods which are used by a supplier in the course of, and the important part is furtherance of business. Input तभी होएगा जब वो furtherance of business में use किया जा रहा है. If it is not used for furtherance of business, it would not be considered as a input. So for being an input, it is required that it should be used in furtherance of business. Now this explanation to section 143 of CGST Act, it is again very, very important, and you have to understand this explanation. What would be the taxability or applicability of tax on an intermediate product? Intermediate product would be covered under the definition of the input. So there was a difference in concept of intermediate product under the earlier definition of the Excise Act. I am talking about the Central Excise Act. I am not talking about the State Excise Act, which levies tax on the liquor and all. Under the Central Excise Act, there was a concept of difference between the on the intermediate products, and there were some views that it can become taxable. But here it has been made clear under section 143. So what are the requirements? हमको ये समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है. Whether a job worker is required to be registered, whether he is mandatorily required to be registered or not, that is very important, and that we have to see. तो सबसे पहले हमको we have to understand that there is no compulsion that the job worker should be registered. अगर वो 10 लाख रुपए का जॉब वर्क कर रहा है तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर जॉब वर्क की डेफिनेशन में आना है सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत. ओनली एंड ओनली इफ ही क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड. एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? जॉब वर्क इज अ सर्विस, it is not goods. It is done on goods, but it is not goods. So job work is a service, and therefore the threshold for the job work would be 20 lakhs rupees. So if he crosses the threshold and the limit for registration, only then he would be required for registration or going for it. But otherwise, there is no condition under the CGST Act he has to go for it. What is the condition then for registration? आप कह रहे हैं कि मिस्टर घिया आपने अभी तो कहा था कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बट दैट वाज फॉर द प्रिंसिपल, only the principle, because if you want to be covered under the definition of the job work under the CGST Act, it is required that you have to be registered. The principal has to be registered as a registered GST person. And if he is not registered, there is no question that he would be covered under the definition of the job work. Then input tax credit. Section 19 talks about the input tax credit relating to the job work. And this is very, very important. You will have to understand the concept of input tax credit under the job work and for the purpose of the job work. So section 19 is the key point. सेक्शन 19 बताता है कि किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लिया जा सकता है. तो सेक्शन 19 का सबसे पहला कंडीशन क्या रहता है कि प्रिंसिपल कैन सेंड इनपुट्स कैपिटल गुड डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर. उसको अपने यहाँ माल मंगाने की जरूरत नहीं है. द प्रिंसिपल कैन सेंड डायरेक्टली द इनपुट्स और द
capital goods directly to the job worker. He does not have to get the goods first to his business place and then he should send it. The question would come, sir, how can it be done? There are three dealers. A is the principal, B is the job worker, C is the supplier. So can C directly send the goods to B and bill it to A? Yes, sir, that can be done. And that is under the dispatch and bill to and ship to model. That is under section 10(1)(b) of the IGST Act. जहां पर ये कहा हुआ है कि आपका बायर कोई हो सकता है और आप गुड्स को उसके डायरेक्शन पे थर्ड पार्टी को शिप कर सकते हैं. द सेकंड क्वेश्चन कम्स, सर मैं बिल टू शिप टू मॉडल पे तो बिलिंग कर दूंगा, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका जो बायर है उसको मिलेगा. यानी कि आपने ए बी सी में सी ने माल तो भेजा बी को, लेकिन बायर उसका यह है ए, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ए को मिलेगा. तीसरी बात, क्या सर मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा तो ए के नाम करूंगा या बी के नाम करूंगा? Whether the e-way bill has to be generated in the name of A or B by C. Sir, e-way bill, there are two columns, the buyer and dispatch too. So in the column of the buyer, you will have to mention the name of the buyer, that is A. In the column of dispatch too, you will have to mention the name of the job worker, that is B. And then the benefits of section 19 can be claimed. So that is very important. That cut down the cost for the transportation for the principal as well as for the job worker as well as for the supplier. And therefore you have to understand the concept of this. The second is, sir, what would be the time limit of the goods for which can be retained by the job worker? Now time limits are mentioned. Goods must be returned to the principal within a period of 1 year. That is for the inputs. And 3 years for the capital goods. आपने कोई माल प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के पास भेजा है जॉब वर्क करने के लिए, वो 1 साल के अंदर अंदर वापस आना चाहिए. If it does not come within 1 year, then it would be treated as an outward supply and you will have to charge tax on it as per the norms. And for the capital goods, the time limit is 3 years. In 3 years, the capital goods which the principal has given to the job worker for working on his goods, that has to be returned back to the principal. But there are exceptions to it. Usme kuch exceptions. And what are the exceptions? The time limitation of 1 year or 3 years would not apply to molds, dies, jigs and fixtures or tools sent for the job worker for job work. जो माउल्ड्स होते हैं, जो सांचे होते हैं, जो टूल्स होते हैं, हथौड़ी होती है या और कोई आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स आते हैं. कल ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था चाइना के संदर्भ में, where it was said that 90% of the hand machine tools are now coming from China, electronic hand machine tools. We have to go see that dependence come down. But though the limitation under the job work of 1 and 3 years for input, that is 1 year, and for capital goods, that is 3 years, they do not apply to molds, dies, fixtures or jigs or hand tool or tools. And the last one, अगर जॉब वर्कर ने कोई काम किया, जैसे मैंने आपको वो जूते का एग्जांपल दिया था, उसने बकल खुद ने लगाकर दिया, तो क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का? If the job worker is registered, he can claim the benefit. But if he is not registered, then no benefit. आपको मालूम है, we had talked about it, that to claim a benefit of input tax credit, it is required that registration is must for a registered person to claim benefit. But in this case, if the job worker is registered and he is using some of his material in the job work, जैसे आपने अपने मकान की ग्रिल बनाने के लिए लोहा भेजा किसी जॉब वर्कर को कि एक गेट बना दो या मकान की खिड़की की ग्रिल बना दो,
और वहां पर पता चला कि उसमें 2 डिजाइन लगने थे, वो डिजाइन आपके पास नहीं थे, तो आपने जॉब वर्कर को कहा कि आप खुद लगा दो। जब आप उससे अकाउंट करने गए, when you went to account for it, then you said, okay, that is, the amount is of labor is this, and what is the cost of the design you had affixed on the gate or the grill or the window. He said that would be, say, 500 rupees. If the job worker is registered, he would be charging you tax for it, but if he is not registered, then no tax. So these are the conditions of section 19, which you have to understand, and you have to understand for the simple reason, because if you violate the conditions of section 19, the limitation of 1 year or 9 year, the charging of tax or the charging of input tax credit, it becomes a problem. Now the question comes, sir, how can I send the goods to a job worker? Do I have to issue a tax invoice, or do I use delivery challan? So my dear friends, the law is very clear that if you are sending the goods for the job work to a job worker, then you can use delivery challan. And if the goods are not returned within the stipulated period, that is 1 year or 3 years, which we had discussed, then you have to issue the tax invoice. But if it comes back within the stipulated period of 1 year or 3 years, then there is no requirement of issue of tax invoice. And then when you sell the goods to your ultimate buyer, you can issue the tax invoice. So this is very important for movement of goods without payment of GST. सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर हमको जॉब वर्कर के लिए माल, जॉब वर्क के लिए माल बेचना है, तो हमको जीएसटी की लायबिलिटी आएगी क्या? क्या वो आउटवर्ड सप्लाई मानी जाएगी? Will it be considered as a taxable transaction? The answer is no. And this chart shows that you can use the delivery challan. So first graphic shows supplier of inputs, he send the goods to job work, and he uses on delivery challan. So he uses delivery challan. There is no tax invoice. And when you are using delivery challan, then no tax. So you can send the goods without payment of GST. On completion of the job work, the job worker has 2 options. He can send the goods to other job worker. For that, again, there is a process that he has to endorse the delivery challan on which the earlier the goods had been received by him, and he will make a delivery challan of himself also, or he can return the goods, final goods, to the principal. If he returns the final goods to the principal, the delivery challan which we are talking would be made in triplicate. ये क्वेश्चन आता है कि इसको किस तरह से बनाया जाएगा, तो it would be made in triplicate, and then it would be utilized. One would be retained by the principal, 2 copies would go to the job worker, 1 copy would be retained by the job worker, and after completion of the job work, the job worker would return it along with his bill and an endorsement on the delivery challan, earlier delivery challan received from the principal, that I had completed the job work and I am sending it back. तो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से जॉब वर्कर के पास माल आ सकता है. एक तो जो सप्लायर ऑफ इनपुट है, वो ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्ट बेच सकता है. एक प्रिंसिपल भी डायरेक्ट जॉब वर्कर को माल बेच सकता है. So he can, there are 2 ways where the goods can be given to the job worker, directly by the supplier or by the principal. And there are 2 ways again by which the principal can return, the job worker can return the goods. That is, he can send it to other job worker and he can send it to the principal back after the job work. But sir, the condition of 1 and 3 years, वो अप्लाई करेगी. अगर ये सारा काम within 1 year or 3 year it does not happen, then it would be considered as an outward supply, and you have to show the transaction in GSTR1, and you have to pay the tax along with interest. Pay tax along with interest, and that becomes very important. I had shown you only 2 modes by which the
goods can be returned in this slide, but I would be showing you a third way also, where the job worker can dispatch the goods. But first, सबसे बड़ी बात होती है scrap की. We take care of the smallest thing. When we send the goods for the job worker, we don't care कि scrap का क्या होगा. But scrap is also very costly. Scrap is also very valuable. स्क्रैप की भी वैल्यू होती है. आप सोचिए, आयरन का स्क्रैप है वो भी बिकता है, अगर सोने का काम है वो भी बिकता है, अगर कोई और चीज लकड़ी है, लकड़ी का बुरादा भी बिकता है. सो एवरी स्क्रैप हैज इट्स वैल्यू. तो स्क्रैप सेक्शन 143(5) उसको डील करता है. वो कहता है कि वो वापस से प्रिंसिपल को आ सकता है, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो उसको बेच सकता है, और उस पर टैक्स, जो भी एप्लीकेबल टैक्स होगा, that would be charged by the job worker. Now, in the previous slide, that is this slide, I was talking about one section 143, that is movement of goods without payment of GST. And if you see, on completion of the job worker could send the goods to two persons, other job worker or back to principal. But there is one other way, and that way is mentioned in this. That way, you have to understand what would be the procedure for movement of goods. It has to be from supplier of inputs or principal input, semi-finished principal goods to job worker, another job worker. And then the best part, third person. There are three persons where the job worker can send the goods. And these three persons are very important. So supply of goods after completion of job worker can send the goods first to another job worker, second to principal, and third to recipient of goods. That is, the principal can direct that the goods from the job worker can directly go to the third party, and the principal would, what the principal would do? The principal would issue the invoice for the tax invoice for the outward supply. But for it, there are two conditions to be complied with. Two very important conditions to be complied with. The job worker should be registered, and if the job worker is not registered, then his place of business should be mentioned as an additional place of business in the registration certificate of the principal. So these are the two very, very important conditions जो आपको ध्यान में रखनी है. Sir, somebody asked me, Mr. Ghiya, you are complicating the things. Why are you saying कि ये ऐसे कर सकता है? मैंने जॉब वर्कर को माल दिया, जॉब वर्कर से वापस माल ले लिया, इससे इजी क्या हो सकता है? But that does not happen. It depends upon the nature of the trade. It depends upon various various contingencies. Some trade have only one job work to be done, but some trade has that there is a requirement of 10 job work to be done. And then some trades are where the cost of transportation is so heavy that if the transportation is coming back to the principal and then going back to another job worker or to the other purchaser, then the cost of transportation would be very heavy and it would make the business unviable. मैं एक आपको टेक्सटाइल की बात करता हूं. आपको एक शर्ट बनानी है. शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले कपड़ा खरीदा जाता है. कपड़ा रंग के लिए जाता है. इट गोज फॉर द कलरिंग. कलरिंग होने के बाद स्टार्चिंग के लिए जाता है. उसके बाद वो जॉब वर्कर के लिए कोई मशीन में जाता है, फिर किसी बटन लगाने के लिए जाता है, फिर पैकिंग के लिए जाता है, एंड देन इट इज डिस्पैच टू द अल्टीमेट परचेजर. Now for this coloring, dyeing, everything, there are other, in a big factory, it can be done in a big way. But for a small factory, for a small artisans, there are various job workers. So it moves from job worker to job worker. And after considering all these type of transactions, the government has come out with this scheme that a job worker can send it to another job worker,
return it to the principal, or can send it to the ultimate purchaser, and the principal can book the invoice, issue the tax invoice. But again, for all these things, आपको वो लिमिटेशन ध्यान रखनी है. दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. दिस चार्ट एंड दिस चार्ट, these two charts are the basic charts for this working. You have to take the limitation of 1 year and 3 years into consideration. If you violate those conditions, if you go over 1 year or 3 years, then you have to issue the tax invoice, and with retrospective effect, the tax would be leviable and you will be liable for interest also. So friends, this is the concept of supply. Now the question comes, sir, आजकल जॉब वर्कर के पास से एक्सपोर्ट किया जा सकता है क्या? Export, because export you have to be very competitive, and the client comes to you and put up various questions about this job work and the movement of goods, and you get confused. क्योंकि जॉब वर्कर का जो काम है उसके मूवमेंट और टैक्सेबिलिटी को if you are not able to understand, it can create a havoc for the transaction. So that is why I told you the third category here, the recipient of goods category, you can directly export the goods from the job worker. Here, if you are exporting the goods directly from the job worker, LUT or bond will be of the principal and not of the job worker. And invoice will be issued by the principal. So it is not the export of the job worker, it is the export of the principal, and therefore for all compliances, जो भी हमको compliance करनी है, जो भी working करनी है, export से related जो भी working करनी है, वो सारी working हमको principal account में करनी है. But the question is, from the job worker place, can the goods be sent directly to the port or to the airport for export? Yes, sir, that can be sent directly. And what are the compliances? Now that is very important, the compliances. If you are not aware of the compliances, the whole problem comes. The first thing is that form GSTR1 principal has to show if you are not getting it within a period of 1 year or 3 years. You have to do the accounting of inputs and capital goods in the account of the principal. Intermediate goods are considered as inputs, and that is very good. Don't go with the earlier version of the Central Excise Act. In the Central Excise Act, there were a lot of litigation regarding the intermediate goods, but here there is no litigation about the intermediate goods. They are considered as an input. And then for all these job work transaction, form ITC04 has to be submitted by the principal on a monthly basis. And this ITC04 is a very complicated form, my dear. It is really a complicated thing, but then yes, it has to be submitted. For the initial 2 years, it was not required. For the initial 2 years, it was not required, but now it is required, and therefore you have to submit. The questions now: supply of services. Who has to pay the tax? How the value has to be determined? That is very important. So job worker is liable for registration, and when a job worker becomes liable for registration, either he goes for voluntary registration, या तो वो voluntary registration ले लेता है, या he has crossed the threshold limit. If he crosses the threshold limit, or he does some transaction which is under the compulsory registration category transactions, then he has to pay a GST on the services provided. And what the valid invoice would be raised by the job worker at the time of supply of service. Value would be as per the determination rules, valuation rules, which are already given in section 15. Valuation rules I had discussed day before yesterday, and I had told you about the related party transaction and other party transaction, discounting and different prices for the same transaction for different persons. So the valuation can be according to the customer, according to the working, and not otherwise.
Now this chart becomes section 15. We had already discussed it, and therefore I would be just passing through this section 15. But it is important because we are talking about the job work and the valuation. So valuation would be what can be the value of services. He has to include as per section 15. And value of services used by him supplying job work services, if recovered from the principal, that would have to be included. But there are certain categories which says that the value of the mold and dies, jigs and fixture or tools, they are not to be included. E-way bill. Sir, we had talked about everything. The supply to the job worker, the receipt back from the job worker, the onward movement to the other job worker, the onward movement to a supplier, but we had not talked about e-way bill. And can without e-way bill any movement be made? The answer is no. You have to follow the recitals of section 129. You have to follow the recitals of e-way bill. And if the value is more than the as prescribed under the e-way bill, or if there is no exemption provided even under the local rules, you have to generate a e-way bill. So as per rule 138 of the CGST rules, e-way bill is required for even for job work transactions. The e-way bill is required to be generated by the principal. Principal जो है उसको e-way bill generate करना पड़ेगा. It is not by the job worker. Then the question comes, sir, e-way bill में क्या value लिखी जाए? E-way bill में you have to write the value of the goods. Sir, what would be the value written when the job worker return the good to the principal? प्रिंसिपल से गुड जा रहे हैं जॉब वर्कर के पास, जब तो वो वैल्यू ऑफ गुड्स लिख देगा. लेकिन जब जॉब वर्कर से माल वापस जा रहा है प्रिंसिपल के पास, when the goods are returned from by the job worker after doing the job worker to the principal, what is the value of goods he has to mention? And my dear friends, here again he does not have to mention only the job charges. He has to mention the value of the goods, and that becomes very important. So these are certain notifications which are very important. And first notification is regarding the jewelry, goldsmiths and silversmiths. The second notification is regarding the obtaining of the casual taxable person be reduced by 5%. Now there are certain clarifications also which you have to be considered. Now this clarification is very, very important. Principal to first job worker, when the goods are being sent, challan has to be, I had talked to you that no tax invoice is required. A delivery challan has to be made, but whether the delivery challan has to be made in one copy or triplicate, the clarification says that it has to be made in triplicate. 2 copies are to be sent to the job worker with goods. Job worker will send 1 copy along with the goods when returning back to the principal. But if he is not returning the same to the principal, then what would happen? If he is not returning the back to the principal, what would happen? He can move the goods to the other job worker for further job work. He has to issue a challan, and the challan issued by the principal can be used or can be endorsed by the job worker for that purpose. And these are the similar moves. Goods returned by the principal by job worker under the cover of the challan can be used either by principal of the job worker, issued by the principal, has to be endorsed by the job worker. So apart from his bill, कभी कभी एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर जॉब वर्कर ने बिल दे दिया और प्रिंसिपल का चालान नहीं भेजा. That would be a violation of the provision. That would be contrary to the provisions of the CGST Act and the circular issued. And then the fourth category, where the goods are sent directly by the supplier to the job worker. Again, I had told you about the procedure. These 6 are, this circular 3812 talks about all the probabilities, all the workings, where the goods are to be sent and where the goods are not to be sent. If the goods are sent directly by the supplier to the job worker, what would happen?
In the case of imports, the custom station, you see, there is a bill of entry for home consumption, and the bill of entry would be generated, and principal has to issue a challan under Rule 45 and send to job worker. So in the case of import, this condition becomes very, very necessary. Now, what is the rate of tax? Now, this becomes very important. My dear friends, you have to understand that these are the three categories. If the person that is service provider, and who is the service provider here? The service provider is the job worker. And if the job worker is registered, if he is registered and the service recipient is naturally a registered person, because if he is not a registered person, it would not be covered under the GST law. So both the persons, the principal as well as the job worker, are registered. The GST rate is 12%. If both are registered, the GST rate is 12%. If the job worker is registered, but the principal is not registered, then it would be 18%. I will give you an example. आपने अपने मकान का गेट बनवाने के लिए एक जॉब वर्कर को गेट लोहा भेजा. You are an individual person, you are not registered, but the job worker is registered. What tax would he charge? He would charge tax at the rate of 18%. आपने अपने एक चेयर बनवाने के लिए लकड़ी खरीदी. लकड़ी एक कारपेंटर वाला जो जॉब वर्क करता था उसको भेजी कि एक आर्टिस्टिक चेयर बना के दो मेरे को, एक अच्छी सी खूबसूरत चेयर बना के दो. He made a very beautiful chair. He was a big manufacturer. You are an unregistered person. If you are an unregistered person, but he is registered, he would charge tax at the rate of 18%. But there can be a third category also. The job worker is also unregistered and you are also unregistered. Job worker is also unregistered and you are also unregistered. No tax, no GST. आप कहेंगे, sir, what are you talking about? My dear friend, that is right. If you are also unregistered and the job worker is also unregistered, there is no liability to tax. And that is the beauty of these transactions. So this chart again becomes very important for you to understand how to move on. Now, these are some of the rate notifications which I had reproduced because it is very difficult sometimes. So for some commodities, the job work rate has been reduced to 5%. And what are those commodities? That is printing of newspaper, textile and textile products, printing of books, printing of all goods, which attract IGST at the rate of 5% or nil. And hides and skins, I would not be going through the notifications. There are certain job work on which rate of tax would be 12% and certain job work on which the rate of tax would be 18%. But there are certain job work on which, like diamond, you will see diamond is a high value item. Diamond is something which we all want, which we all aspire. एक अच्छी रिंग होनी चाहिए, डायमंड की चूड़ियां होनी चाहिए, डायमंड का हार होना चाहिए, बट उसके लिए जॉब वर्क की रेट सरकार ने बहुत कम कर रखी है, and that is 1.5%. So there are different rates. You will say, sir, why are you referring to the rates for the first time in these 7 days? Because nowhere in these 7 days you had referred to the rates. The only reason I am referring to the rates, my dear friends, is because for the job work there is not a blanket rate. There is no single one rate. There are different rates according to the various job work, and you should be very cautious when you refer or say that what is the rate, because yesterday when we had talked about the advance ruling and how to file and why to file the advance ruling application, there the question comes, because in the job work there is lot of confusion.
In the works contract, there are a lot of confusion. And because of these confusions, these rates become very important. So friend, this is all about the job work I was talking about. And then I would be now taking very fast some of the provisions for offenses and penalties. Now, what are certain offenses? Section 122. So this section, you have to be very cautious with this section. This section covers all type of offenses. Now, if you see this section, though the penalty amount is quantum is very low, but you will have to cover that all type of offenses are covered under this one section. Supplies without issue of invoice, incorrect invoice, issued invoice without any supply, collects the amount. Now, issue invoice means you are not delivering the goods. So what you are doing, you are delivering the goods to other person and issuing invoice. That becomes a bogus bill case also. So you have to be very cautious, and that is covered under 122, and that would be covered under the ITC disallowance also. So it is something you have to take care. Now the third offense, collect the tax as tax but fails to pay the government within 3 months of it becoming due. 6 महीने से किसी ने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने उससे पूछा जब वो फाइल करने आया कि do you want to file the return? Yes sir, I want to file the return. Had you collected the tax? Yes, I had collected the tax. Why do you not deposit it? Sir, I would deposit with interest. But that is an offense under section 122. But that is because you had utilized the government money. And for that, penalty and proceedings under 122 can be conducted. So you have to be very cautious in telling your client that don't retain or don't file the returns later than by 3 months. You have to be very regular in compliance of the returns. I would be not talking about the 51 and 52 because these are TDS and TCS provisions. And the last one is very important. Takes or utilizes ITC without actual receipt of goods or services. One day in this series, a question was asked to me, sir, the bill is of 31st January. The goods had been received on 4th February. Can I claim ITC in January? I had told him कि नहीं, जब तक माल या सर्विस रिसीव्ड नहीं हो जाती, you cannot claim ITC. As per the law, you have to go to section 16(2) of the CGST Act. And here, if you do it, पुराने टाइम में वेट के टाइम में हम इनवॉइस की डेट से आईटीसी लेते थे. हमको सी फॉर्म इश्यू करना होता था तो क्या होता था, अकाउंटिंग हम इनवॉइस की डेट से करते थे, वरना महीने का फर्क आ जाता था, क्वार्टर का फर्क आ जाता था. अब कॉन्सेप्ट चेंज है, अब महीना का क्वार्टर का फर्क नहीं है. यू हैव टू डू अकाउंटिंग नॉट विद द डेट ऑफ इनवॉइस बट ऑन द डेट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज हैड बीन रिसीव्ड बाय यू. सपोज ऑन 30th मार्च सम कंपनी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की बात करते हैं अपन, तो कंपनीज क्या करती है, 31st मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, वो डंप कर देती है सामान को. When they dump the goods, they issue the invoice in 30th March, but the goods are actually delivered. E-way bill is normally generated after 31st March, that is on 2nd of April or 3rd of April or 4th of April. अब आप उसमें ITC कब लेंगे? Takes or utilizes ITC without actual receipt of goods or services. If you take it in March, you are violating section 122. Penalty can be levied. Fraudulently obtains refund of tax. I had already told you about the export refunds and all. And then there are certain offenses which are routine in nature. I would not be discussing because they will take much of the time. That are takes or distributes ITC in contravention of section 20, falsifies or financial records, obstruct, liable to registration, fails to take registration, transport goods without cover of document, all these offenses. And then these offenses continue, and what are the penalties? And I am talking penalties with regard to 122 only.
10,000 rupees or equivalent amount of tax evaded or tax not deducted under 51 or 52. ITC availed or it should be or distributed irregularly or refund a claim fraudulently, and whichever is higher. The word is not whichever is lower. The word is whichever is higher. So you have to be very cautious. ये जो list of offences हैं, there are 20 offences which are narrated here. There are 20 offences which are narrated here, and for these 20 offences, these are the penalties. And for these penalties, it says the limit is not 10,000. Sometimes मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर 10,000 की तो upper limit है ना? There is no upper limit of 10,000. There is no upper limit of 10,000. Then we move on to the next section, 122(1)(a). अगर हम जो ऊपर सब क्लॉज 1 में, 2 में, 7 में, 9 में बेनिफिट ले लेते हैं, तो वहां पे पेनल्टी अदरवाइज प्रोवाइडेड है. एंड ये जो प्रोविजंस की हम बात करते हैं, वी मूव ऑन टू द अदर प्रोविजंस. सबके अलग अलग उन्होंने दे रखे हैं, बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है 123. वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन, यू हैव टू सी. इसमें एक प्रोविजन जो है ये 25,000 तक का है, 122(3) का. अभी तक हमने 122(1) की बात करी थी और 122(2) है शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की. बट इस पे मैं बहुत ज्यादा अभी जाऊंगा नहीं, आपको मैं ले जाऊंगा 122(3) पे, क्योंकि ये 25,000 का पेमेंट छोटी छोटी बातों के लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है कि आप कोई एड और अबेट करते हैं. मतलब आप ऐसे पर्सन नहीं है जिस पे प्रोसीडिंग चल रही है, बट किसी ना किसी कारण से आपने उसको अबेट किया, तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है. आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपको कोई इंफॉर्मेशन आई, उसमें गलती करी, तब भी लगाई जा सकती है. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सब क्लॉज 4. I think you are all getting my voice clear. There is something that is subclause 4. You fail to appear before the officer. When a summon is issued for appearance or to produce documents, don't take it lightly. That was I was talking about section 70 when we were talking about the summons. If you do not, because adjournment application, mention of adjournment application has to be given. Otherwise, penalty which can extend up to 25,000 can be levied by the authority, and that is where you have to understand. If you do not file the information return, that is 123, there is a penalty of 100 rupees per day that can extend up to 5,000 rupees. And return and for failure to furnish information under section 151, again a penalty that is mentioned. That is, I think, generally not would be there. But the last clause, section 125, that is very, very important again. That says contravention of provision not provided for otherwise. जो चीज कहीं पर भी नहीं लिखी हुई, जो चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं है, वो ऑफेंस भी अगर आपने कर दिया, आपको भी मालूम नहीं होगा क्या ऑफेंस कर दिया, आपको भी मालूम नहीं होगा. अब हम ये सहज सुरल की बात करते हैं, सहज सुगम फॉर्म्स की बात करते हैं और सिंप्लीफाइड जीएसटी की बात करते हैं. बट देयर द पेनल्टी बिकम्स of 25,000. That is the upper limit. For the lower, the penalty can be levied. Now, section 126 talks about the general principle. माइनर ब्रीच है, 5,000 रुपए से कम का ब्रीच है, नो पेनल्टी. अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो इजीली रेक्टिफिएबल है, दैट कैन बी डन, उन केसेस के लिए, माइनर ब्रीचेस के लिए पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती. कोई भी पेनल्टी लगाएंगे उसके पहले दे हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग. दैट इज मस्ट, दैट इज रिटन. बट माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन द नोटिस इज इशूड,
You have to mention in the notice, in the reply to the notice, apart from your explanation, that we require an opportunity of personal hearing. And therefore, in the prayer clause to the reply to the notice, you should always mention that we request for a personal hearing in the matter. If you do not request for a personal hearing, आपको कोई नोटिस आया, आपने बढ़िया सा जवाब बना दिया, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा कि मेरे को पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, हो सकता है वो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे. अगर आपने वॉलंटरीली कोई गलती हो गई और वो गलती आपने बताई, तो हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगे. ये भी 126 में प्रोवाइड किया गया है. लेकिन अगर एक फिक्स सम कहीं पे प्रोवाइडेड है, तो आपने चाहे वॉलंटरी किया हो चाहे डेलिबरेटली किया हो, उतनी पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी. That is what is mentioned in 126. So you will have to consider, my dear friends, the general disciplines which are mentioned in section 126, and these 126 clearly say for the minor offenses no penalty can be levied, but what are minor offenses has also been described in this section. And then there is a provision which says who would levy the penalty. So it is not automatic. The penalty is not automatic. Penalty is imposition, and imposition is also always after giving an opportunity of hearing. Imposition is after saying that you with a deliberate mind had acted accordingly. So the proper officer has to give a notice for it and reasonable opportunity of hearing. And then the government has given a provision for waiver of penalty. And it says the government may waive penalty under specified circumstances for the class of taxpayer, and there can be reasons for it. And that is why आपने देखा ना अभी आपके 3B के रिटर्न की डेट बढ़ा दी गई, तो रिटर्न की डेट बढ़ा दिया या लेट फी का वेवर कर दिया. The question is, that was I was talking at the class of the ITC. There is no extension of the return due date. That is section 39 return of 3B. The extension is only and only of the date of filing of return, and there is a waiver on the late fee. So there is no due date extension for the return. Section 129 and 130, they are topic in itself, friends. For the paucity of time, I think we cannot cover it. 129 relates to the transit penalty, and 130 relates to confiscation of the goods. And 129 clearly says that in case of 14 days, if the reply is not filed, then automatically the proceedings under section 130 would be started. So 129 and 130 are a class in itself. At a later time, in the next month or so, when we'll come with the advanced course, we will see whether we want to continue with this transit penalty. And then the last one, the compounding of the offenses. The offenses are not something which cannot be compounded. So the commissioner here has a power to compound the offense, and commissioner, for compounding of offense, you have to move an application in the specified format, and commissioner, after hearing, giving an opportunity of hearing, will decide your application for compounding of offense. But again, a disclaimer, again a rider, again a condition. The compounding cannot be done for the 4 specific items. And what are those 4 specific items? Anyone who has already committed any of the offenses mentioned under prosecution above, second time offenders would not be allowed. A person who has committed an offense before GST involving supplies above 1 crore. Third, a person who is accused of committing an offense under there, which is also an offense under any other law. And fourth, the last one, convicted by a court under GST. So for these 4 things, their compounding cannot be done by the authority. So you have to be very careful when you reply to a client, what type of offenses can be compounded and what type of offenses cannot be compounded.
आपको ये समझना पड़ेगा, ये प्रोविजन का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपाउंडिंग होता है, उसका पेमेंट कंपाउंडिंग का कैसे करना पड़ेगा, अमाउंट का किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। आपको 30 डेज लिमिटेशन दी जाती है कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर इसका पेमेंट करना है, और अगर वो 30 डेज में पेमेंट नहीं कर सकता तो जो ऑर्डर पास किया गया है वो वॉइड हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, ये माना जाएगा वो ऑर्डर पास नहीं किया गया। लेकिन अगर आप पेमेंट कर देते हैं, अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो नो फर्दर प्रोसीडिंग्स वुड कंटिन्यू एंड दे विल बी डीम्ड टू बी अबेटेड। और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो गई हैं, then they will be deemed that those criminal proceedings are also abated. So this is something which is good. So friends, this is all about the today's session. I had tried to complete two big topics of job work and offenses and penalties in a fast manner, but giving the practical aspects. Friends, I am grateful to you. I am grateful to you for your continued patronage. 7 दिन तक हम दोनों हम सब लोग एक दूसरे से मुखातिब होते रहे, क्वेश्चन एंड आंसर्स करते गए, and we had completed a 7-day course. I had tried to cover as many topics as I could, and it is because of your continued patronage कि आप लोग आए और आप लोगों ने मेरे को मौका दिया. This had happened. I am also grateful to you that you had purchased my book, which has been marketed by uzu.com. And my dear friends, I am very happy to tell you that today is the last day for the offer of 500 rupees. And almost 500 books had been pre-ordered, booked because of your word of mouth publicity, because of you, and because of interaction between you and me. 500 pre-order books, that is a record in itself. I had never heard that we had sold 500 books on pre-order. The dispatch of the books would start. I had confirmed with uzu.com. The dispatch of the books would start within 3 days. That is either on 25th and 26th. And as per the courier availability and direction, it would be delivered to you within a week's time. So by end of this month or the first week, you will be receiving the books by courier, and we will be dispatching you the details of the courier also by mail. There are a lot of queries. I would be taking the queries, but now I would be handing over. Prashantji, are you there? Yes, sir. Thanks a lot for the session, sir, and thanks for completing the entire course, 7 days. It was really very useful. So we will now go on to take the queries. So our regular visitor, Mr. Sunil L. Talreja, is the first one. Sunil ji, you can ask your question. Good evening, sir. हाँ सुनील जी, good evening. सर मेरी आज 4 क्वेरी थे लास्ट, इसके बाद अभी आपसे नहीं पूछने वाला हूँ. एक बताइए. डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 में सप्लाई वर्ड डिफाइन किया हुआ नहीं है और ईयर कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी. जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई हो जाएगा, बट सप्लाई को अगर सेक्शन 7 में जाकर देखेंगे सर, उसमें ना इंक्लूड्स लिखा हुआ है. हाँ, तो supply ऑल include, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई वर्ड को कहीं पर डिफाइन किया ही नहीं है. नहीं, तो सप्लाई वर्ड डिफाइन नहीं करने के कारण ये और इंक्लूड्स करने के कारण ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई और इसका स्कोप बहुत बढ़ गया. हाँ, बट इसमें आगे फिर लिखा है सच एज, मतलब उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं सिर्फ. हाँ, बट वो उन्होंने वर्ड स्टार्ट किया है सप्लाई इंक्लूड्स. तो वो ये वास्ट डेफिनेशन हो जाएगी. वास्ट डेफिनेशन, यस, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. और ओके सर, दूसरा सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में जो आईटीसी के लिए प्रोविजन लिखा है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ द इनकम आईटीसी चार्ज्ड. मतलब अगर किसी ने गलती से मुझे ज्यादा टैक्स चार्ज कर दिया है तो कोई भी प्रॉपर ऑफिस मेरे से
उतना ITC मेरे से विड्रॉ नहीं करवा सकता, हाँ जी, बिकॉज इट इज मेंशन्ड एज ITC चार्ज, मतलब 5 बट की वो बजाय अगर किसी ने डेबिट 12 बाय वर्च्यू ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यू कैन डू इट, ओके। और सर बिकॉज डेबिट नोट और क्रेडिट 143 नोट के प्रोविजन ये कहता है। हाँ, और सर दूसरा 143 सबसेक्शन 2 जो है जॉब वर्क वाला, जहाँ पर प्रोविजो कहता है कि 143(2) हाँ बोलिए, 143 मेरे पास बुक नहीं है अभी, आप ही बताएंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, उसमें लिखा है कि जॉब वर्कर को अगर ये प्रिंसिपल को अगर गुड्स सप्लाई करनी है जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से, तो हाँ। उनको उसको उसकी प्लेसेस जॉब वर्क की प्लेस अपने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स में एडिशनल POB करके मैंने दिखानी इसलिए पड़ेगी। मेरी PPT में वो कंडीशन डाली है, 2 कंडीशन है, या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए या उसको Registered, एडिशनल प्लेस दिखानी चाहिए। अच्छा। वो और सर कंडीशन है, वो जी PPT में मेरे लिखी हुई है। जी, और सर अगर इन सबको अवॉइड करना हो 1 ईयर का प्रोविजन, तो हम हाँ। टेक्सटाइल सेक्टर को ये गाइड कर सकते हैं कि आप अपना जो मटेरियल है वो जॉब वर्कर को सेल करके दिखाइए, और जैसे ही उनका प्रोसेस हो जाए वो फिर उनसे परचेज कर लीजिए, क्योंकि वैल्यू तो उनकी वैसे भी बढ़ने वाली है। तो नहीं 1 उसमें ईयर क्या का होता है, प्रोसेस। नहीं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सेल और परचेज में आपके इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है, जीपी रेशियो फर्क हो जाता है, आपका एनपी का फर्क आ जाएगा, तो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, इट इज नॉट वेरी इजी, so it depends on case to case, there cannot be a general answer to your query. अच्छा, ओके सर, थैंक यू Thank you, थैंक Sunil. यू सो Thank you. मच। We will move on to Sunil Mangla ji. हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ सुनील जी बोलिए। सर कई दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। मैं अरे actually जब आपका सेशन पूरा मैंने गाड़ी में ही देखा है 2-3 दिन लगातार। सर मेरे दो तीन क्वेश्चन थे। बोले सर। एक तो जो जॉब वर्क के केस में, जैसे जॉब वर्कर के पास माल आ गया 50,000 या 1 लाख रुपए का, उसने उसको चालान बना के भेजा। हाँ जी। जॉब वर्कर ने उस पर 10,000 रुपए अपने सर्विस चार्जेस लगाए। हाँ जी। जब वो ई-वे बिल बना के भेजेगा दोबारा, उसको वापस भेजेगा हाँ। प्रिंसिपल को, तो वो ई-वे बिल 1,10,000 का बनेगा, 1 लाख का बनेगा? वो आप 1,10,000 का बनाएंगे तो ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स हो जाती है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन अगर आप 1 लाख का भी बनाएंगे तो इट इज नॉट अ इन्फ्रिंजमेंट, बिकॉज मार्केट वैल्यू इज अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्रेटेड आइदर वेज। ओके, मतलब 1 लाख के बनाएंगे तो बेटर रहेगा वो। हम दोनों बना सकते हैं, बेटर है कि आप 1,10,000 का बनाते हैं, बट दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें वायलेशन की बात नहीं आती। ठीक है। दूसरा सर मेरा ITC 4 से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ जी। 19-20 की ITC 4 का भी कोई फॉर्म नहीं इशू दिखाई दे रहा है उस पे। हाँ उसमें डेट बढ़ा दी गई है ना। अच्छा, कब तक हो गई सर इसकी डेट? अब वो नया नोटिफिकेशन आने वाले हैं 30 सितंबर तक की डेट के, पहले अच्छा। 30 जून तक बढ़ा दी थी उसको, लेकिन अब वो उसके बाद आगे का बढ़ा दिया, नए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। ठीक है सर। एक सर ये था कि मैंने ना एक ITC लिया हुआ है, एक फिक्स असेट्स का। हाँ जी। और मैं प्रोपराइटर हूँ, और मेरी 1 साल के बाद मैंने अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ। हाँ। अब जो फिक्स असेट्स का ITC है वो मुझे वापस मतलब जमा कराना पड़ेगा या डिसअलाउ करना पड़ेगा, कैसे करूंगा? डिसअलाउ करना पड़ेगा, या तो आप उसको लोअर प्राइस पे सेल आउट करवा दें। हाँ, सेल आउट करवाने के बाद जो तो अगर आप सेल आउट कर देंगे उसको तो बढ़िया रहेगा वो। अच्छा, तो डिफरेंस अमाउंट उसमें देना पड़ेगा ना सर हमें? जो बिल्कुल देना पड़ेगा। नहीं, डिफरेंस अमाउंट की जरूरत नहीं रहेगी अगर डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे आप सेल आउट कर देते हो तो। अच्छा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है सर। एक क्वेश्चन और था। जॉब वर्क अगर ज्वेलर्स करता है, हाँ जी, मतलब जैसे छोटे छोटे ज्वेलर्स होते हैं ना, उनके पास बिल्कुल मैं समझ गया। तो उस पे जॉब वर्क का रेट 18% ही आएगा सर? नहीं नहीं, उस पर मैंने नोटिफिकेशन दिया है मेरी PPT में, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है उनके लिए ये मेरे ख्याल से 3% या 5% रेट है। नहीं सर, वो ऐसा है कि अगर वो ज्वेलर्स के लिए जॉब वर्क करते हैं वो उनके लिए है सर। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ जॉब वर्क ज्वेलर्स करता है, जॉब वर्क मान लो मैंने अपनी चेन ठीक कराई उससे, हाँ, उसके लिए मैं कैसे रेट ऑफ टैक्स कह रहा हूँ? अगर आप नहीं, वो नोटिफिकेशन को आप रेफर करिए एक बार, वो नोटिफिकेशन को रेफर करेंगे तो आप देख पाएंगे। उसमें मैंने सर पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे ये तो लेट मी चेक। एक काम करते हैं सुनील जी, आप मेरे को मेरे मोबाइल पे क्वेरी भेज दीजिए, ठीक है मैं सर। चेक करके इसको आपको बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर, थैंक यू। Thank you, Sunil ji. We will move on to Uday Shankar Das ji. नमस्कार सर। नमस्कार उदय भाई, बताइए।
मेरा एक क्वेश्चन है, आपने हाँ। तो 7 दिन इतना अच्छा आपका नॉलेज शेयर किया हम लोग का साथ, थैंक यू सर। सर अरे सर क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टीशिप फार्म से पार्टनरशिप कन्वर्ट हुआ हाँ ड्यू जी, टू ओल्ड एज ऑफ प्रोप्राइटर। हाँ जी, उधर में जो स्टॉक है उसमें आईटीसी ज्यादा नहीं है, लगभग हाँ जी, 25 लाख का स्टॉक है। हाँ जी। तो ये कैसे ट्रांसफर करूं मैं पार्टनरशिप फर्म में? वो आईटीसी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में आता है, आईटीसी 02 देना पड़ेगा। बट व्हाट आई आईटीसी नहीं सजेस्ट, है। नहीं है तो आपको नई फर्म में कर दीजिए और उसमें नया रजिस्ट्रेशन लेके आप बिजनेस कर हाँ, दीजिए। इनकम टैक्स के लिए आपको ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। अच्छा नहीं, जीएसटी में कुछ नहीं करना पड़ेगा? जीएसटी में आप जब पुरानी फर्म का क्लोजर कर रहे हैं तो उसमें मेंशन कर दीजिए क्लोजर में रीजंस, अच्छा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू, और नई जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। अच्छा, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू उदय जी। वी विल मूव टू एम के नारायण स्वामी जी। Hello. या मिस्टर स्वामी साहब कैसे हैं? Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। Thank you very much for the excellent explanation, sir. Once again, यस सर, थैंk you, thank you. sir, one small query. This frequency for filing Form ITC 04 by Yes. the principal is on a monthly basis or a quarterly basis, sir? I think it's on a quarterly basis by 25th of the month succeeding the quarter, if I remember right. Yeah. I think you are right. It is Yeah. quarterly. Because slide 13, it was mentioned as Yes. monthly. No. I just That was wrongly. want to seek a clarification, sir. That's Quarterly. it. Yes, sir. Thank you very much, sir. Previously it was monthly, so that there has not been a change. Yes, sir. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. अविनाश केडिया जी। अविनाश केडिया जी अनम्यूट करके बोलें प्लीज। गुड इवनिंग भैया। हाँ, गुड इवनिंग अविनाश जी। भैया एक तो सेशन आपका बहुत अच्छा रहा, आपका रेगुलर मैं सेशन अटेंड करता रहता हूँ। आई एम अटेंडिंग ऑल द सेशंस ऑफ योर्स। आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग भैया। Yes. जॉब वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन अ ईयर। Yes. So he has to issue a bill. So that bill will be on which date and what will be the and how will charge the interest on that and how will I file the return? GSTR1 you will have to issue the bill to the job worker and interest would be charged from the day one when the goods had been dispatched to the job worker. Bill date, on the date I'll be issuing the bill. On the last bill date would be the date After 1 year. After 1 year, but interest would be chargeable from the date the delivery challan was issued. Thank you भैया। Thank you sir. ओके सो एक यूजर है Realme1 नाम से, आप अपना सवाल पूछें प्लीज। ओके सो वी विल मूव ऑन टू तरुण गुप्ता जी। तरुण गुप्ता जी आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सर ये कहना था कि जो डिलीवरी इनवॉइस के ऊपर 16 पॉइंट्स होने चाहिए, लिखा होना चाहिए, उसमें टैक्स का भी अमाउंट होना चाहिए। हाँ जी। जैसा कि आपने कहा कि भाई इसमें टैक्स जब जॉब वर्कर को माल जाता है तो उसमें टैक्स अमाउंट नहीं लिखा जाना चाहिए। मैंने कहा था जॉब वर्कर को जब माल जा रहा है तो टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है, डिलीवरी चालान से जाएगा वो। हाँ सर, डिलीवरी चालान की कंडीशन है ना, 15-16 पॉइंट डिलीवरी चालान में क्या क्या लिखना चाहिए, तो उसमें टैक्स का भी हम पॉइंट आता है, इसमें टैक्स लिखा जाना चाहिए। नहीं मैंने आपको कहा, आपकी बात सब सही है, लेकिन डिलीवरी चालान इज नॉट अ टैक्स इनवॉइस एंड व्हेन इट इज नॉट अ टैक्स इनवॉइस इट वुड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। नहीं सब सही है, पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स के कॉलम में क्या लिखना, नहीं लिखना फिर उसमें। नहीं, टैक्स के कॉलम में आपको जो टैक्स रेट है वो इसलिए डिलीवरी चालान में लिखानी पड़ती है कि आपको अगर 1 साल का इंफ्रिंजमेंट करते हैं तो उस रेट से टैक्स लगेगा और उसमें रेट ऑफ टैक्स का डिस्प्यूट नहीं हो। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको उस समय टैक्स देना है या 1 साल बाद देना है। तो आप जो जॉब वर्कर को माल बेचते हैं उसमें कहीं पर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता। मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ, मेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेंशन तो सर करना पड़ेगा ना, पेमेंट नहीं करना। आपकी बात सही हो है, लेकिन मेरी बात समझिए,
क्लाइंट को ये समझना होता है कि वो उसको टैक्स पेमेंट करना है कि नहीं करना। हाँ, टैक्स जैसे मान लो 1 लाख का माल मैं भेज मैं रहा हूँ, समझ गया आपकी बात, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। 18,000 1,18,000 का बनेगा ना। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, पेमेंट ऑफ टैक्स इज इंपॉर्टेंट। आपको दिखाना कैसे पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन को, ठीक है? थैंक यू तरुण जी। वी विल मूव ऑन टू राम अवतार अग्रवाल जी। हाँ बोलिए। सर ये अपने डिलीवरी चालान का कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है क्या अंडर द जीएसटी लॉ? नहीं, डिलीवरी चालान का कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, बट जो रूल्स में और एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 30 उसमें देखना पड़ेगा आपको। मिस्टर अतुल कक्कड़ जी। सर मेरा प्रश्न ये था कि when the principal is sending the goods to job worker, he is raising a e-way bill. हाँ जी। But after the work is over, who will raise the e-way bill? Either job worker or the if the job worker is registered, he will raise the e-way bill. If he is not registered, the principal who is registered, he will raise the e-way bill. right, so he can raise, right? Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू अतुल जी। दिनेश चौधरी जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साहब, बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, प्रोप्राइटरशिप फर्म है और रजिस्टर्ड है, उसने एक कार खरीदा कम ये फर्म के लिए काम के लिए, तो क्या उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा सर? नहीं, आप सेक्शन 17(5) के रिसाइटल्स में जाइए, वहां हाँ पर ये सर। लिखा हुआ है कि अगर आप टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं हाँ तभी सर। आपको इनपुट क्रेडिट अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम है सर, और नहीं वो मिलेगा, नहीं कार के मिलेगा लिए सर। नहीं मिलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम है, आप एक्सकावेटर खरीदते हैं हाँ सर। तो वहां पर डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। अच्छा, वहां पे मिल सकते, कार के लिए नहीं मिलेगा। अब बाइक यदि स्टाफ के लिए कर रहा है जो कोई नहीं साइट पे जाने, हाँ सर, गाड़ी साइट पे घोड़ा आने, कुछ भी नहीं मिलेगा, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। दिनेश चौधरी जी। दिनेश गुप्ता जी। हेलो। हाँ दिनेश जी। हाँ सर मेरी एक क्वेरी है, जो आपने बताया था कि जॉब वर्क पे जो अगर मोल्ड्स वगैरह अगर इशू करते हैं तो उस पे 3 साल की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी बेसिकली। हाँ, कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स में मतलब 3 साल में वापस लाना जरूरी नहीं है उसको, उससे ज्यादा हाँ, टाइम जरूरी नहीं है। हाँ, दूसरा एक हमारे क्या प्रॉब्लम है, जैसे हम जॉब वर्कर से जो काम करवा रहे हैं तो उसी से मोल्ड बनवा रहे हैं और उस मोल्ड को वो अपने वहीं पर रखता है अपने जॉब वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। मोल्ड की बिलिंग हमारे को कर देता है, लेकिन एक्चुअल मोल्ड का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है। तो उसका मोल्ड की मूवमेंट जरूरी है, वो आईजीएसटी में बिलिंग कर रहा है, दूसरे स्टेट में रह रहा है तो नहीं, अगर वो बिल में ये लिख देता है कि द मोल्ड्स आर बीइंग रिटेन्ड ऑन द डायरेक्शन और ऑफ द प्रिंसिपल, तो फिर उसमें मूवमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका जॉब वर्कर भी है। कि वो क्या बिल तो हमारे नाम से कर देता है, कंसाइनी अपने आप को खुद को ही रखता है जो बिल इनवॉइस रेज। वो कर सकता है। 10(1)(b) में मूवमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें मूवमेंट कंपलसरी नहीं है बेसिकली। 10(1)(b) ये कहता है कि सेम स्टेट में भी मूवमेंट हो सकता है बट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, तो आपका स्पेसिफिक केस है इसलिए आपको अलाउ हो जाएगी आईजीएसटी क्रेडिट ले सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं इसमें। एक दूसरा इशू सर, हमारे को कई बार जो है जॉब वर्कर को कोई मटेरियल जा रहा है तो बाई बस में जैसे लेके जाते हैं मोल्ड वगैरह कुछ भी काम, तो उसके केस में ई-वे बिल कैसे बनेगा सर? जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो उससे बनेगा, वरना प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो उसको बनाना पड़ेगा। व्हीकल नंबर कैसे देंगे उसमें बेसिकली? किसमें? वो पार्ट बी बाद में जनरेट होता है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टर भर सकता है। नहीं, ट्रांसपोर्टर तो नहीं है, खुद ही बस में लेके जा रहा है कोई आदमी। नहीं तो उसमें वो भी ऑप्शन होता है बाई सेल्फ का। अच्छा, बाई सेल्फ लेके जा सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल, व्हीकल नंबर कंपलसरी नहीं है बेसिकली। नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर बाई सेल्फ अगर के लिख करके उसमें वो ऑप्शन भी होता है अगर आप ई-वे बिल में जाएंगे। अच्छा, तो उसको यूज कर सकते हैं। दिनेश गुप्ता जी, थैंक यू। प्रशांत जी, आई थिंक वी आर क्रॉसिंग द टाइम, एक दो क्वेरीज और ले लें। ओके सर। वी वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी। एक बार फॉर्मली सबने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को देना पड़ेगा। हाँ, तो सर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, शिवराम हेगड़े जी का। हाँ, शिवराम जी बोले।
शिवराम जी अनम्यूट करके बोले प्लीज। अच्छा चलिए, नहीं बोल पाते। श्रद्धा वैष्णव जी बोलिए आपका क्वेश्चन। श्रद्धा वैष्णव जी सुन पा रहे हैं? ठीक है सर, आई थिंक वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम, so you can conclude. So friends, it has been, there are some questions, but please I would request all those persons, please send the questions on the Uzu group or to me, and we will try to answer all those questions. It has been a real pleasure. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 7 दिन आप लोगों के साथ बड़ा मजा आया। मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपकी क्वेरीज से, और कुछ क्वेरीज तो ऐसी थी जिसमें एक बार तो वो कहते हैं ना, पुराने जमाने का वो प्रसन्ना और चंद्रशेखर और ब्रिशन सिंह बेदी क्रिकेट खेलते थे, वो याद आ गए कि उनकी गुगलीज थी, और उस गुगली से बचना और आउट नहीं होना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था। बट मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपनी काबिलियत से जितनी कोशिश हो सकती थी वो कोशिश करी कि आप सबके साथ अपने विचार शेयर करूं, और आप लोगों ने चैट बॉक्स में और मैसेजेस में, मेरे को पर्सनल मैसेज में जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, मैं दिल से हार्दिक रूप से आप सबका धन्यवाद। I am greatly thankful to you all, and for the subscribing my books, purchasing my books, and subscribing to this Uzu case management software. I am greatly thankful to you, friends. Uzu.com and IDT library को भी मैं थैंक यू कहूंगा, जिन्होंने ये सोचा और एक 7 वीक कोर्स आपके साथ मेरे को करने की अपॉर्चुनिटी थी। विद दिस थिंग, कल वापस मैं भी रहूंगा, सेशन में रहूंगा, but tomorrow we will have income tax session on the recent amendment. Do join at the same time, 4:45 p.m. I would also be a participant like you tomorrow. So see you tomorrow again, 4:45 p.m. And thank you Prashant ji for giving me this opportunity. Thanks a lot Pankaj sir for giving us your valuable time. And I just want to inform all the participants that your certificates will be sent to you on your registered email, the email that you use for registration, and those will be done by tomorrow. So you will get the digital copy of your certificates by tomorrow. And do join us for the last day session tomorrow by Mr. Rajesh Mehta, chartered accountant from Indore. He will be talking about income tax recent amendments. So same time, same link, you can log in tomorrow also and take benefit of the last day of the session. So thank you everybody for joining in once again, and we'll see you tomorrow. Thank you sir. Thank you. Bye-bye. Yep. अरे वो चल रहा है, मेरा वीडियो बंद कैसे होगा? लीव कहाँ है ये?